are you all, my dear shining stars? Your mentor Aprajita is here with a new chapter of class 6 geography, that is chapter number 16, motions of the earth. तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के मोशंस के बारे में. So let's start it. And हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? Importance of the earth motions. अर्थ के मोशंस की क्या इंपॉर्टेंस है? Rotation, revolution. The ancient people considered that the earth was stationary, but it was not true. पुराने जमाने में लोग क्या सोचते थे कि ये जो अर्थ है, जो प्लैनेट अर्थ है जिसपे हम रहते हैं, ये एक जगह पे ही रुकी रहती है. ओके, इसका कोई मूवमेंट नहीं होता. बट ये सच नहीं. The earth makes movement. An Indian astronomer Aryabhat discovered the movements of the earth, and again in 16th century a Polish astronomer stated the same thing. अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा था. तो आर्यभट्ट ने ही ये फाइंड आउट किया था कि अर्थ में मूवमेंट होता है. एंड फिर से 16th सेंचुरी में किसने, एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने भी यही बात बोली. द मोमेंट्स दैट द अर्थ मेक्स आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. अब जो अर्थ के जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें एक होता है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन. फाइन चिल्ड्रन, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्थ मोशंस. अर्थ के मोशंस के क्या इंपॉर्टेंस? इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट एंड रिवॉल्व, इट्स सेम साइड वुड फेस द सन एट ऑल टाइम्स. अगर अर्थ न तो रोटेट करे और न ही रिवॉल्व करे, न ही अपने एक्सिस पे घूमे और न ही सन का चक्कर लगाए, तो क्या होगा? जो एक साइड है अर्थ का वो ही हमेशा सन की तरफ है. Only one side will face the sun. It would be a continuous day in one half and a continuous night in the other half, and both these will have extreme temperatures. और फिर क्या होगा? अगर एक ही साइड पे सन रेज पड़ेंगी, सन की तरफ एक ही साइड होगा अर्थ का, तो क्या होगा? कंटिन्यूस डे होगा एक साइड पे और दूसरे साइड पे कंटिन्यूस, दूसरे हाफ में कंटिन्यूसली नाइट ही होगा. और दोनों जगह पे, दोनों तरफ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. Thus, rotation and revolution of the earth are important for us as they cause day, night and seasons. इसलिए अर्थ का जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि डेज और नाइट्स होते हैं और सीजन्स फॉर्म. Now let's read about rotation. ये रोटेशन क्या है? The spinning of the earth on its axis is called rotation. अब देखिए, ये एक्सिस पे जो ये अर्थ घूमती है अपने ही एक्सिस पे, अपने ही धुरी पे, उसे कहते हैं रोटेशन. Its axis is formed by the 2 points, the north pole and the south pole. See, this is north pole, this is south pole. और इसी से इसका इन 2 पॉइंट से एक्सिस बनता है. The earth rotates west to east. वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है वो अपने एक्सिस. The tilt of the earth is 23.5 degree. ये जो tilt है ना अर्थ का, जो एक तरफ झुकाव है, that is 23.5 degree. The earth makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. और ये जो अर्थ है ये कितना एंगल बनाती है? 66.5 degree. See, this is the angle, orbital plane. It is known as the inclination of the Earth's axis. इसको कहते हैं inclination of the Earth's axis. By orbital plane, it means the plane is formed by its orbit around the sun. अब ये orbital plane का मतलब क्या हुआ कि जो plane बनता है उसकी ऑर्बिट से, राउंड द सन, सन के राउंड जो ऑर्बिट होता है उससे जो प्लेन फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. द वन हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव्स सनलाइट एंड एक्सपीरियंसेस द डे, व्हाइल द अदर हाफ व्हिच इज इन डार्क एक्सपीरियंसेस द नाइट. अब जिस साइड पे सनलाइट पड़ रही है
अर्थ के वन हाफ पे जहाँ सनलाइट पड़ रही है वहां पे तो डे होता है, दिन होता है, और जहाँ सनलाइट नहीं पड़ती है उस अदर हाफ में नाइट होता है। The speed of rotation at the equator is 1600 km per hour. This speed decreases when you go north or south of the equator. अब ये जो रोटेशन का स्पीड है इक्वेटर पे जो है वो होता है 1600 किलोमीटर पर आवर, और ये जो स्पीड है ये कम होती जाती है जब नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाते हैं इक्वेटर। एट द पोल्स द मूवमेंट इज वेरी लिटिल, और पोल्स पे जो मूवमेंट है वो बहुत कम होता है। दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस एंड इट्स ऑर्बिटल प्लेन। फाइन चिल्ड्रन, now circle of illumination. As the earth turns west to east, कैसे मूव करती है वो? वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ मूव करती है। The area under sunlight keeps shifting. अब जो सनलाइट में जो एरियाज आते हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होते रहते हैं। The area which comes under sunlight experiences morning, while the area which comes under dark experiences night. अभी पढ़ा हमने। As the area shifts, the day rises or sets. अब जैसे जैसे एरिया शिफ्ट होता रहता है दिन बढ़ता रहता है। ओके, मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग से डे हुआ, डे से फिर आफ्टरनून होता है, इस तरह से दिन बढ़ता रहता है एंड फिर सेट भी हो जाता है। उसके बाद इवनिंग होती है, आफ्टर दैट द सन सेट्स। The circle or the line that divides the day from the night on the globe is called the circle of illumination. Now see children, circle of illumination किसे कहते हैं? उसको जो सर्कल और लाइन जो डिवाइड करती है दिन और रात ग्लोब पे। ऑन ग्लोब दिन और रात को जो लाइन डिवाइड करती है दैट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ illumination. The earth tilts at an angle of 23.5. भी हमने पढ़ा ये earth tilt कितना tilt है इसका? 23.5 degree. Fine. If it did not tilt, the length of the days and nights would be equal. अगर ये tilt नहीं होता तो जो दिन और रात का जो लेंथ है वो बराबर होता, दिन और रात दोनों बराबर होता। But due to this tilt, the days and nights are not of equal length. और इसी tilt की वजह से जो दिन और रात है वो equal length के नहीं होते। Light a torch at a globe. अब ग्लोब पे एक टॉर्च लाइट डालें तो क्या मिलेगा आपको? यू विल फाइंड दैट ओनली वन पोल इज इन लाइट व्हाइल द अदर रिमेन्स इन द डार्क। जब आप एक ग्लोब पे टॉर्च लाइट मार के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ही पोल पे लाइट जा रही है, दूसरा पोल डार्क। नाउ रोटेट द ग्लोब, you will find that the area shifts from light to dark and dark to light, but the pole in light continues to face light. अब अगर आप ग्लोब को घुमाएंगे, जब ग्लोब को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो क्या होगा? एरिया शिफ्ट करता जाएगा लाइट से डार्क की तरफ और डार्क से लाइट की तरफ, लेकिन जो पोल कंटिन्यूअसली लाइट फेस कर रहा है, लाइट जिस पोल पे आ रही है वहां पे कंटिन्यूअसली लाइट आती रही, while the pole in dark continuously will be dark. और जो पोल डार्क में है वो कंटिन्यूअसली डार्क में ही रहेगा। It follows that some areas on the earth receive light for a longer duration than the other areas. Now comes the revolution. Revolution क्या? The earth also goes round the sun and this motion is called revolution. अर्थ जो है वो सन का भी चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस पे तो घूमती ही है लेकिन वो घूमते घूमते ही सन का भी चक्कर लगाती है। इस मोशन को कहते हैं रेवोल्यूशन। द पाथ दैट द अर्थ ट्रेवल्स इज फिक्स्ड एंड इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। अब जिस पाथ पे ये देखिए है अर्थ का ऑर्बिट, दिस इज सन। अब ये जो अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, इसका एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसे कहा जाता है ऑर्बिट। This orbit is elongated like an egg and is called the ellipse. अब ये जो ऑर्बिट है देखिए राउंड नहीं है, ये कैसा है? elongated, जैसे एग का शेप होता है ना, थोड़ा सा लंबा सा,
वैसा elongated है ये अर्थ का ऑर्बिट, और इसे क्या कहते हैं? एलिप्स. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेरीज. और अर्थ और सन से जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है, एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है. ड्यू टू दिस elongated path, इस elongated path के कारण ये जो सन का जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है. When the earth is nearest to the sun, it is called perihelion. क्या बोला जाता है? जब अर्थ सन के बहुत पास होता है उसे कहते हैं perihelion. And when it is farthest, it is called aphelion. देखिए, ये अर्थ है, ये सन है. यहाँ पे अर्थ जो है सन के पास है, तो इसे कहा गया है पेरिहेलियन. और यहाँ सन, ये जो अर्थ है वो सन से दूर हो गया है. This is known as aphelion. Okay? When the earth is in the state of perihelion, revolves faster than when it is in aphelion. जब अर्थ पेरिहेलियन के स्टेट में होता है तो वो रिवॉल्व जल्दी जल्दी करता है, और जब ये एपिहेलियन के स्टेट में आ जाता है तो पेरिहेलियन से कम इसका रिवॉल्व जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है रिवॉल्व. The earth takes about 365 days and 6 hours to complete one revolution. सन के चारों तरफ का जो चक्कर है उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है ना. रोटेट तो अपने एक्सिस पे करती है और रेवोल्यूशन होता है अर्थ के चारों तरफ. तो कितना टाइम लेती है? 365 days and 6 hours to complete one revolution. एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लग जाते हैं? So we have 365 days in a year. इसलिए एक ईयर में, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 days. The additional 6 hours are added over 4 years to make 1 day. और ये जो additional 6 hours है ना, 365 days and 6 hours, इन 6 hours को 4 years में ऐड कर दिया जाता है जिससे कि 1 day और बन जाता है. And this day is added to the leap year. और इसे लीप ईयर में ऐड किया जाता है, इस एक दिन. Thus all the years which can be divided by 4 are leap years. तो कौन से साल लीप ईयर कहलाते हैं? जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, those are leap years. The month of February has 28 days, but in a leap year it has 29 days. फरवरी के मंथ कितने दिनों का होता है? 28 डेज का. लेकिन जिस साल में लीप ईयर होता है उसमें इसमें 1 डे ऐड ऑन हो जाता है और ये बन जाता है फरवरी 29 डेज. ओके, नाउ सीजन्स. द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द चेंज ऑफ द सीजन्स. और इसी रोटेशन और रेवोल्यूशन से सीजन्स भी आते हैं, चेंज होते हैं सीजन. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर faces the sun, it receives sunlight for a longer duration and it results in summer in this hemisphere. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस करता है, सन की तरफ, सन का फेस होता है इसकी तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो उसको सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है वहां से फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. और इसका रिजल्ट क्या होता है? इस हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं, गर्मियां होती हैं. It results in longer dark hours in the southern hemisphere, resulting in winters there. और जो southern hemisphere है वहां पे dark ज्यादा होता है, लंबे टाइम के लिए dark hours होते हैं और वहां पे winter season. The earth has 4 chief positions in the cycle of its revolution. और revolution के cycle में उसके 4 main positions क्या है वो? As a result of which it has 4 seasons. अब 4 जो पोजीशंस हैं सन के, अर्थ के जो 4 पोजीशंस हैं उसी से 4 सीजन्स बने. स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. The 4 positions of the earth in relation to the sun are assumed on 21st June, 23rd September, 22nd December and 21st March. ये दिन है 4 positions अर्थ के in relation to sun. Summer solstice. The longest day in the northern hemisphere occurs on 21st June because on this day the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, 23.5 degrees north.
जो सबसे लंबा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो कब होता है? 21 जून को. एंड व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज इस दिन जो सन होता है वो वर्टिकली शाइन करता है. वर्टिकली कहाँ पे फॉल करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके. इट इज समर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स इन दिस हेमिस्फीयर. इस हेमिस्फीयर में गर्मियां होती हैं जिसके कि दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं. एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द समर सेमेस्टर्स. और इस सिचुएशन को कहते हैं समर सेमेस्टर्स. Now, fact to know, as the region from the North Pole to the Arctic Circle receives sunlight continuously for 24 hours, the phenomenon of midnight sun occurs in the countries of Norway and Sweden. Now, children, let's move further and read about the winter solstice. अभी हमने summer solstice के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे winter solstice. The longest night in the northern hemisphere occurs on 22nd December. अब हम विंटर के बारे में पढ़ रहे हैं, विंटर सॉल्स्टिस के बारे में. तो जो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी रात होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो कब होती है? 22nd December. On this day the sun shines vertically over Tropic of Capricorn. अब क्या हुआ? यहाँ पे सन जो है वो शाइन करता है वर्टिकली किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 degrees south. It is winter with shorter days and longer nights. अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे विंटर्स होते हैं, उसमें जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं in this hemisphere. And this situation is called the winter solstice. और इस सिचुएशन को कहते हैं winter solstice. Now see Earth's revolution and seasons. Okay? Now equinox. अब ये equinox क्या होता है? Very interesting thing, children. Listen to it very carefully. On 21st March and 23rd September, these 2 days, 21st March and 23rd September, the sun shines vertically over the equator. अब ये sun जो है vertically कहाँ shine करता है? Equator पे. Neither of the poles is tilted towards the sun on these days. अब इन दिनों पे कोई भी पोल sun की तरफ tilted नहीं होता. As a result, the days and nights are of equal duration throughout the earth. इस टाइम पे जो दिन और रात होते हैं पूरे अर्थ पे बिल्कुल इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं, बराबर के होते हैं. This situation is called the equinox. इस सिचुएशन को कहते हैं equinox. On 23rd September, the autumn season occurs in the northern hemisphere and the spring season in the southern hemisphere. और 23rd सितंबर को ही ऑटम सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और स्प्रिंग सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में. एंड ऑन 21st मार्च दिस सिचुएशन इज रिवर्स्ड. और 21st मार्च को ये सिचुएशन उल्टा हो जाता है. दैट इज इट इज ऑटम इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. फाइन चिल्ड्रन? Thus you can see that the rotation and revolution of the earth are responsible for the phenomena of day, night and season. डे नाइट और सीजन्स का मेन जो रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? वो है रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. सो नाउ क्विकली लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर राइट नाउ. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. द टू मोशंस ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. द मोशंस ऑफ द अर्थ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द occurrence of day, night and seasons. The unequal length of days and nights is due to the tilt of the earth. The earth revolves round the sun in an elongated path called orbit. Right? जो elongated path पे earth revolve करता है sun के चारों तरफ, उसे कहते हैं orbit. The hemisphere which receives sunlight for a longer duration has summer, and the one which receives sunlight for a shorter duration has winter. The sun shines over the Tropic of Cancer vertically on 21st June. 21st June को sun जो है vertically कहाँ shine करता है? On Tropic of Cancer. And it shines over Tropic of Capricorn on 22nd December. Fine. The days and nights are equal on 21st March and 23rd September because the sun shines vertically over the
कहाँ पे सनशाइन करता है वर्टिकली? ओवर द इक्वेटर on these days. So now children, some exercise here. Objective type questions. Take the right option. The spinning of the earth on its axis is known as, जब earth अपनी axis पे spin करता है उसे क्या कहते हैं? Rotation, revolution, spinning. It is known as rotation. The earth tilts at an angle of, earth का जो tilt है अभी हमने पढ़ा डायग्राम में देखा था, कितना होता है tilt? 23.5 degree, 60.5 degree, 23 degree. It is 23.5 degree. When the earth is nearest to the sun, it is called aphelion, perihelion, ellipse. It is known as perihelion. A leap year has dash days. एक leap year में कितने दिन होते हैं? 365, 366, 28. It has 365 days. The days and nights are equal on dash, 21st March, 23rd September, both. The days and nights are equal both on 21st March and 23rd September. So tick both. Okay children, understood? Okay children, now some fill-ups to do. Fill in the blanks. The earth's motion on its axis is called. अपनी ही axis पे जो earth का motion होता है उसे क्या कहा जाता है? It's known as rotation. Fine. The earth's motion around the sun is called revolution. R-E-V-O. Revolution. The elongated orbit of the earth is called the ellipse. जो elongated orbit होता है earth का उसे कहा जाता है ellipse. Next is the sun shines over the Tropic of Cancer vertically on. कब vertically Tropic of Cancer पे sunshine करता है? It's on 21st June. Fine children. The situation of equal day and night is called the equinox. Equinox. Now comes the true and false. Write T for true and F for false. The Earth's orbit is circular in shape. No, this is false. It is elongated in shape. Aphelion shows the condition when the Earth is farthest from the Sun. True. The northern hemisphere and the southern hemisphere experience the same kind of season at one time. No children, this is false. In the winter solstice, it is summer in the southern hemisphere. Yes, this is true. Days and nights are equal on the equinox. Yes, true. Fine. So, this is all in this chapter. I hope you have understood this chapter. You enjoyed this chapter. So, stay tuned for the new video. I'll meet soon with a new chapter for you. Something interesting, something more knowledgeable, and something more to know about. So children, stay happy, stay blessed. Bye.